Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is a lecture of FM03 and we are discussing about what is auction market today and what is auction in stock market. इससे पहले लेक्चर में भी हमने स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग मींस इक्विटी मार्केट के रिगार्डिंग स्टडी किया. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे विद व्हाट इज ऑक्शन. इससे पहले हमने डिस्कस किए थे कुछ टॉपिक्स या सब इसमें, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, बेयर मार्केट क्या है, बुल मार्केट क्या है. उसी में आज हम आगे ऑक्शन करेंगे. इससे पहले हमने ये क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इन स्टॉक मार्केट क्लियर किया था. इसके अलावा हमने मेथड्स पढ़े थे स्टॉक मार्केट के, मार्केट सेगमेंट्स पढ़े थे स्टॉक मार्केट के. तो आज हम स्टॉक मार्केट में ऑक्शन की बात करेंगे कि व्हाट इज ऑक्शन. सो ऑक्शन, an auction tender notice is issued by the exchange to the members informing them about the names of the scrip short or not delivered. तो ऑक्शन टेंडर जो है इसका नोटिस बेसिकली इशू किया जाता है सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द नेम्स ऑफ द स्क्रिप बाय द एक्सचेंज. Then auction for the undelivered quantities is conducted on T+3 day. T+3 डे, जैसे इससे पहले हमने T+2 डेज पढ़ा था कि मंडे को ट्रांजैक्शन हुई है तो वो सेटल वेडनेसडे को होगी T+2 में. और यहाँ पे ऑक्शन के रिगार्डिंग अगर मंडे को कुछ हमें ऑक्शन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी है या ट्रांजैक्शन या कुछ अनडिलीवर्ड है उसे कंडक्ट करना है तो मंडे को हुई है तो इट विल बी सेटल्ड ऑन थर्सडे, दैट इज T+3 डे बिटवीन 11 AM and 12 noon. 11 बजे सुबह के 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक. फॉर ऑल स्क्रिप अंडर कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट एक्सेप्ट दोज इन Z ग्रुप एंड स्क्रिप ऑन ट्रेड टू ट्रेड बेसिस व्हिच आर डायरेक्टली क्लोज्ड आउट. तो ऑक्शन में ये चीजों का हमें ध्यान रखना होगा. A member broker who has failed to deliver the score securities of a particular company on the paying day is not allowed to offer the same in auction. अगर कोई मेंबर ब्रोकर है जो टाइम पर सिक्योरिटीज को डिलीवर करने में फेल हो गया है किसी पर्टिकुलर कंपनी की उस दिन जिस दिन पे इन डे था तो उस तरीके के पर्सन को अलाउ नहीं किया जाता ऑक्शन के लिए. The members who participate in the auction session can download the delivery orders in respect of auction obligations on the same day. जो भी मेंबर्स ऑक्शन सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो डिलीवरी ऑर्डर्स को डाउनलोड कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑक्शन ऑब्लिगेशंस ऑन द सेम डे. So these are some of the things regarding auction. Then payout of auction shares and funds is also done on the same day. Pay in day T+4 है, payout day भी T+4 है. Then functions of stock exchange. So what are the functions of stock exchange? That is, it promotes the savings. Stock exchange savings को promote करता है, liquidity provide करता है to the investors, means easily availability of cash. Then profitable activities for companies. कंपनी के लिए profitable activities के लिए उनको enhance करने के लिए work करता है. Then permits for the investor to have a political power in the companies. Then possibility of diversifying for your portfolio. These are some of the major functions of stock exchange. Then we will discuss about the role of stock exchanges. What kind of role the stock exchanges are playing? First is raising the capital for businesses. Company businesses की capital raise करने का role है. Then mobilizing savings for investment. Then facilitating company growth. Then redistribution of wealth. Then corporate governance, then creating investment opportunities for small investors. Then government capital raising for development of projects and barometer of the economy. So these are some of the roles that have been played by the stock exchange. Then commonly used contracts, कौन से contracts use होते हैं basically in stock market? Forwards and futures. So forward क्या? Forward contract is a customized contract between two entities where settlement takes place on a specific date in future at today's pre-agreed price. So forward का मतलब आगे forward कर देना. तो यहाँ पर भी एक contract है जो customized contract है two parties के बीच में जहाँ पर जो settlement है it takes place on a specific date in the future. आज हम जो agreement कर रहे हैं वो जो भी आज हम सेटलमेंट करना चाहते हैं वो इन फ्यूचर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट पर फाइनल होगा. दैट विल also
प्राइस पे बेस उस पर वर्क करेगी। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस। ये भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी एग्रीमेंट टू पार्टीज के बीच में होता है। यहाँ पर भी हम सेल या परचेज ऑफ एसेट्स करते हैं सर्टेन टाइम के लिए इन द फ्यूचर के सर्टेन टाइम के लिए एट अ सर्टेन प्राइस। Future contracts are special type of forward contracts in the sense that the former are standardized exchange traded contracts। तो फ्यूचर में हम करेंगे तो फ्यूचर प्राइस के हिसाब से करेंगे। फॉरवर्ड में जो आज फाइनल किया हमने प्राइस उसको हम फ्यूचर में उसी प्राइस पर डील करेंगे। सो दीज आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन स्टॉक मार्केट, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। Then other types of commonly used contracts are also there। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं। अभी हम पढ़ेंगे ऑप्शंस क्या होता है स्टॉक मार्केट में। ऑप्शंस आर टू टाइप्स। ऑप्शन भी टू टाइप्स का होता है, कॉल्स एंड पुट्स। कॉल्स एंड पुट्स दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। कॉल्स गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। कॉल क्या है? कॉल जो है, कॉल गिव द बायर द राइट। कॉल भी बायर को राइट तो देता है बट साथ ही साथ ऑब्लिगेशन है टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। अब पुट्स क्या है? पुट्स गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ गिवन डेट। पुट में भी बायर के पास राइट तो है बट उसके पास उस टाइम पे वो राइट नहीं है कि वो गिवन क्वांटिटी को सेल कर सके, और आप कॉल्स में ये राइट बायर के पास होता है। तो ऑप्शंस आर ऑफ टू टाइप, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। देन स्वैप। व्हाट इज स्वैप्स? स्वैप्स आर private agreements between two parties to exchange cash flows in future according to pre-arranged formula। स्वैप एक प्राइवेट एग्रीमेंट है और ये भी टू पार्टीज के बीच में होता है एंड इट इज रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज एक्सचेंज करने के लिए इन फ्यूचर ये एग्रीमेंट किया जाता है। They can be regarded as portfolios of the forward contracts। The two commonly used swaps are। अब यहाँ पर भी swaps के two types हैं। swap के two types कौन से? interest rate swap and currency swaps। तो interest rate swap क्या है? These entail swapping only the interest related cash flows between the parties in the same currency में किया जाता है। currency swaps क्या है? These entail swapping both principal and interest between the parties with the cash flows in one direction being a different currency than those in the opposite direction। different currencies में भी डील करता है। तो swaps are of two types, interest rate swaps and currency swaps। Then other contracts in stock exchanges, warrants and leads। What are warrants? Options generally have lives of up to 1 year। The majority of options traded on option exchange having maximum maturity of 9 months। ऑप्शंस की मैक्सिमम मेच्योरिटी 1 ईयर या 9 मंथ्स मानी जाती है। तो लॉन्ग डेट ऑप्शन के लिए वारंट्स को जनरली ट्रेड किया जाता है। तो ऑप्शंस तो शॉर्ट टाइम के लिए हो गए, 1 ईयर मैक्स हो गए 9 मंथ्स के लिए। तो ऑप्शन से अगर बढ़ाना चाहिए हमें जिसमें हम लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस को यूज कर सके तो उस केस में वारंट्स आते हैं। इट इज लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस आर कॉल्ड वारंट्स एंड आर जनरली ट्रेडेड ओवर द काउंटर। तो ऑप्शंस को अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए डील करना है तो वो वारंट्स बन जाएंगे, और 9 मंथ या 1 ईयर के अंदर करना है तो वो ऑप्शंस रहेंगे। देन व्हाट इज लीड्स? लीड्स की फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज। long term equity anticipation securities, these are options having a maturity of up to 3 years। ये भी type of option है जिसकी maturity up to 3 years रहती है। तो this is also called leads। So these are contracts under stock exchange। Then there is other contracts also under stock exchange, that is basket। What is basket? Basket options are options on portfolios of underlying assets। ये भी एक ऑप्शन है, it is a kind of options for underlying assets। Underlying assets is usually a moving average or a basket of assets। Equity index options are a form of basket option। तो basket option का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर equity index। Then swaptions। What is swaptions? Swaptions are options to buy or sell a swap that will become operative at the expiry of the option। Swaptions भी buyer या sell करने का option है, but किनको? swaps को। Thus, a swaption is an option on a forward swap। So it is a kind of forward swap। Rather than have calls and puts, the swaptions market has receiver swaptions and
an option to receive fixed and pay floating, and payer swaption is an option to pay fixed and receive floating. So this is a kind of swaptions, receiver swaptions and payer swaptions. So this is all about स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और इक्विटी मार्केट. हमने इसमें कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े और कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने पढ़ा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देन व्हाट आर ऑप्शंस. ऑप्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, कॉल एंड पुट ऑप्शन. व्हाट आर स्वैप्स. स्वैप्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड करेंसी स्वैप्स. देन अदर यूज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर वारंट्स. व्हाट आर लीव्स. लीव्स की फुल फॉर्म में दी है इसमें. देन बास्केट क्या है, स्वैप्शंस क्या है. स्वैप्शंस में टू टाइप्स में रिसीवर स्वैप्शन एंड पेयर स्वैप्शन. So these all are the contracts which are used in stock market. So this is the topic we have completed today, and in this we have discussed. आज हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें कि इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. वी हैव स्टडीड व्हाट इज स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट क्या है, हमने उसको पहले लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था. That what is stock market. Stock market is known as equity market. Then we have studied with this Indian stock market. और स्टॉक क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है. ये हमने स्टॉक क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम इक्विटी भी बोलते हैं. फिर हमने स्टॉक मार्केट क्या है ये डिस्कस किया कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट. देन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट पढ़ी कि स्टॉक मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब हमने पढ़ा. स्टॉक मार्केट का एम्स्टर्डम स्टॉक मार्केट फर्स्ट शेयर्स था, ये सब हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं. लंदन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, इट इज 1698 में स्टैब्लिश हुआ. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE कब स्टैब्लिश हुआ, इट इज 1792 में स्टैब्लिश हुआ. देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875. इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ आवर कंट्री और ऑफ एशिया. देन NASDAQ क्या है, इसकी फुल फॉर्म पढ़ी हमने, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन. सो ये 1971 में एस्टैब्लिश हुआ. फिर इसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट पढ़ा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट. देन वी हैव स्टडीड द वर्किंग प्रोसेस ऑफ स्टॉक मार्केट एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 5 steps. दैट इज कंपनी लिस्ट फर्स्ट स्टेप. Then we will move to primary market, then issues of IPOs, then share distributed, and then secondary market trading. So this is the working of stock market. And then we had discussed about what is bull market and what is bear market. Bull is rise in the price or rise in the market, and bear is decline in the market. तो ये हमने डिस्कस किया. उसके बाद मेजर स्टॉक मार्केट्स क्या है वो पढ़ी. देयर आर 2 मेजर स्टॉक मार्केट्स, BSE and NSE. That is Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Then we had come to the BSE. BSE का हमने हिस्ट्री पढ़ा. BSE के बारे में पढ़ा. ये 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था. इसके बाद हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ा. 1991 में फेरवानी कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन की गई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की. इसके बाद हमने इसी में NSE किसमें ऑपरेट करता है, होलसेल डेट मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करता है. देन वी हैड मूव टू व्हाट इज सेंसेक्स. सेंसेक्स क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा. ये रिप्रेजेंटेटिव सेक्टर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का. देन we had discussed about what is dematerialization. Dematerialization in short form we all know, but full form भी हमें पता होनी चाहिए. डीमैट अकाउंट हमने सुना होगा, but डीमैट की फुल फॉर्म है dematerialization and it is compulsory for stock exchange market. इन्वेस्टर को अपना अकाउंट खुलवाना ही होता है. यहाँ पे फिर हमने मार्केट टाइमिंग्स पढ़ी. इसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें अगर हमें ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है. वी हैव स्टडीड दिस. देन व्हाट इज ऑफलाइन ट्रेडिंग. ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है ये डिस्कस किया. देन व्हाट इज ऑनलाइन ट्रेडिंग. ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, उसके फायदे क्या है, वी हैव डिस्कस दिस. देन बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है. Then we have discussed about market segments. 2 टाइप के मार्केट सेगमेंट्स है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Then we have discussed about the methods issuing securities in primary market. Primary market में कौन से methods यूज किए जाएंगे सिक्योरिटीज इशू करने के. IPO, initial public offer, right issue and preferential issues. Then circuit breakers क्या है, we have discussed this. Circuit breakers में mainly 3 stages होती हैं, average 10%, 15% और 20%. Then what are clearing and settlement under stock market, we have discussed this. Then we have discussed today about what is auction. What are the functions of stock exchange market, what are the role of stock exchange market, and what kind of commonly used contracts under stock exchange market, that are forward contract, future contract, options, swaption, swapping.
ये सारी चीजें हमने वारंट स्लीप्स एक्सेट्रा वी हैव डिस्कस्ड टुडे एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। तो आज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और इक्विटी टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये हमारा ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है। आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।